इस कार्यक्रम में मैं बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए आज के जो हमारे प्रमुख वक्ता हैं, जो हमारे चेयरपर्सन हैं, चूँकि ऑनलाइन वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उनका क्लास भी है शायद थोड़ी देर बाद में, तो सबसे पहले क्रम को तोड़ते हुए मैं उन्हीं का उद्बोधन यहाँ से कराना चाहूँगा। एक संक्षिप्त परिचय मैं प्रोफेसर आशीष पांडे जी का यहाँ से देना चाहूँगा। प्रोफेसर आशीष पांडे जी का जो CV या बायोडाटा जिसको कहते हैं वो मेरे पास आया है। अगर इसको पढ़ा जाए तो मेरे ख्याल से ये पूरा सत्र इसको पढ़ने में ही निकल जाएगा, क्योंकि ये कई सारे पन्ने का बहुत सारा इसमें लंबी सी चीज़ें लिखी हुई हैं। इससे ये बताता है कि हमारे साथ में इस कार्यक्रम में कितने अच्छे अच्छे लोग, कितने स्वनामधन्य लोग यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। फिर भी मुख्तसर करते हुए मैं बात को यूँ कहना चाहूँगा कि जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं शैलेश जे मेहता, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे। आप इसके पहले मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट IIT बॉम्बे में रह चुके हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर उसी में, और टीचिंग एक्सपीरियंस आपका जो है और उसमें जो स्पेशलाइजेशन एरिया है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज है, सेल्फ अवेयरनेस और इंटरपर्सनल स्किल्स वर्कशॉप कोर्स है, और को टीचिंग बिजनेस एथिक्स के आप माहिरीन में से गिने जाते हैं, उसकी आप अध्येता रहे हैं। इसके साथ ही ये नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स, नंबर ऑफ बुक्स आपके खाते में जाती हैं। तमाम लोग अपनी PhD में आपसे गाइडेंस में मदद ले चुके हैं। इसके अलावा कई देशों की यात्राएं भी आपके नाम पर हैं, जहां पर आपने जा करके हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है, और बहुत सारे इन्होंने लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस और प्रोग्राम्स भी करा रखे हैं। मेरे ख्याल से पांडे जी हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। पांडे जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? प्रोफेसर आशीष पांडे जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद कोई तकनीकी दिक्कत है। अमित जी जरा देखिए इसको। पांडे जी, शायद आपका माइक जो है वो म्यूट है, इसको कृपया ठीक कर लें। प्रोफेसर आशीष पांडे जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो शायद आपका माइक म्यूट है, इसको ठीक कर लें। हाँ, अभी ठीक हो गया। पांडे जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आवाज पहुंच रही है, और अभी शायद मेरा माइक भी अनम्यूट है। हाँ, और अब मेरा कैमरा भी शुरू हो गया। ठीक है सर, सो काइंड ऑफ यू सर। आपका इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका मैंने कुछ ब्रीफ CV यहाँ से मैंने सबको बताया, सभी लोग बहुत आह्लादित और अभिभूत हैं आपको अपने बीच में ऑनलाइन पा करके। आज का जो ये आपका उद्बोधन यहाँ पर या यहाँ से जो भी आपका वक्तव्य होना है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम इन NEP-2020 आइडियाज फॉर टीचिंग एंड रिसर्च पर है आपका। कृपया आप अपने उद्बोधन देकर के हमारे छात्रों को लाभान्वित करें। नमस्ते। नवरात्रि की और नए विक्रम संवत की बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि हमारी क्लासेस चालू हैं, इसलिए मैं आप सबके बीच इन पर्सन नहीं पहुंच सका। मैं मिस कर रहा हूं, और अभी मुलाकात करने नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ से कुछ बातें आपके साथ शेयर करने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित ही है, मेरा जो विषय है भारतीय नॉलेज सिस्टम, और उसमें हाउ वी इंटीग्रेट दैट इन एजुकेशन एंड रिसर्च। तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूं। जब हम कहते हैं कि भारतीय नॉलेज सिस्टम, तो आशा आप मेरी स्लाइड देख पा रहे होंगे। जी, आपकी स्लाइड विजिबल है। जी, तो ये विषय बिल्कुल सटीक है कि भारतीय नॉलेज सिस्टम तो है,
और बहुत पुराना है और अधिकांश लोग उससे परिचित भी हैं, लेकिन इससे हम एजुकेशन और रिसर्च में किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहले ये देखना होगा कि भारतीय नॉलेज सिस्टम कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो हमारे टेक्स्ट में तो है ही, बहुत सारी जो स्मृतियां हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, धर्मसूत्र हैं, पुराण हैं, उनको एक तो एक सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट ना समझ के और रिलीजियस टेक्स्ट समझ के उसको डिस्कार्ड करने के बजाय उसको अगर नॉलेज सिस्टम का टेक्स्ट समझ के पढ़ा जाए तो उसमें हम काफ़ी कुछ नई चीज़ें और इंसाइटफुल चीज़ें हमको वहाँ से मिल सकती हैं। संस्कृत लिटरेचर बहुत रिच है और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका लिटरेचर भी कम रिच भारत में नहीं है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे तमिल है या कन्नड़ है, वो उनकी जो उनको भी बहुत वर्षों पहले लिपिबद्ध कर दिया गया था और आज उसकी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध है। एक नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन जो है उसी में 4-5 लाख मैन्युस्क्रिप्ट को लिस्टेड किया गया है। अगर आप एक सिंपल कंपैरिजन देखें कि ये बात कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आकर के नहीं कर रहे हैं, लेकिन जस्ट एक पर्सपेक्टिव के लिए हम ये देख सकते हैं कि ग्रीको रोमन कल्चर के लगभग 40-50 हजार मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध हैं और अगर भारतीय कल्चर का देखा जाए तो 4-5 लाख मैन्युस्क्रिप्ट तो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन में ही लिस्टेड हैं और भारत में लगभग 8-10 हजार गुरुकुल आज भी चल रहे हैं और वो चूंकि उनमें से अधिकांश जो है वो परिवार परंपरा से चल रहे हैं तो उनके पास भी अपनी खुद की लाइब्रेरी है, बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स वहां पे भी हैं और बहुत नॉलेज ये सब पड़ा है। अब किन किन विषयों पे नॉलेज है हम सबको पता है, स्क्रिप्चर्स, स्कल्पचर्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, ये एक रिफ्लेक्शन है नॉलेज सिस्टम का। अब पर अगर ये इसलिए इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्शन है, जो स्थापत्य है, स्थापत्य अपने आप में विकसित नहीं हो सकता। स्थापत्य तभी विकसित होगा जब मैथमेटिक्स डेवलप हुआ होगा, जब इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल साइंस वो डेवलप हुआ होगा, जब नॉलेज अबाउट क्लाइमेट वो ठीक किसी के पास होगा, knowledge about the movement of sun, movement of air, variation in the temperature and its impact on structures and its impact on material. When this is known, then only you can have huge structures. So this picture which is shown is a reflection of the sophistication in the sculpture, sophistication in the architecture, sophistication in the art form. But this sophistication cannot come without support of many other knowledge systems, which include material science, which include structural knowledge, which includes civil engineering, which includes mathematics. So this is there, and a lot of that is already existing, is there in the literature. It is there in the manuscripts. Then there is a whole system of trade and seaways and how the movements in the trade used to happen in the seaways. This is the map which reflects how far trade used to happen through Bharat. This is the situation of the first century. This is again a reflection of something more complicated. Like when we look at structure, like when we look at sthapatya, it is
result of we can assess what are the base knowledge. Without that, creating huge temples been possible. Those who have seen of Ajanta or Meenakshi Mandir of Madurai or Brihadeshwar temple, they must have felt overwhelmed with the kindness, with the of the complexity and beauty of the structures at the same time. That is not possible without ways. So many other uh, say when commerce and how far it spread, we can make sense of what are the other knowledge systems would have been prevalent. Because a complicated trade system, a complicated business system cannot exist without without some structure of the business use. It cannot exist without rules and regulations, some form of the contractual law. It cannot exist without good knowledge of the weather conditions to travel across the sea. It cannot exist without knowledge of the water transport system and what are the best methods, what are the techniques for creating ships which travel far, so far places, which can lot loads as well and material which are on which that conducted. So Apatya and trade are the reflection of many systems available. This is the first point I wish to convey. Coming national education policy, the preference given about the, and I would like to use the term BK, Bharatiya knowledge system. India word is given by someone else. Bharat word is the word for this country. There is detailed documentation of the debate took place in the Constitutional Assembly about the name of this country. Why not Bharat word? Why Mudi? Why Bharat? Why India? Why both names are in the preamble? All that is isn't out. So that I'm using the word, you know, education policy, para 22.1 to 22.0. It mentions about the provisions relating to promotion of Bharatiya knowledge. And what is mentioned here is scholarship for people of all ages to study Bharatiya languages, arts, culture with local masters or within the higher education system will be established. This is first time NEP is recognizing in the formal education system we can and we must invite masters, the local masters who may not be PhDs, who may not have done their NET exam and all that, but they must masters in their craft, language, art or other cultural forms. They can be invited. They can be. They should be consulted for education in the knowledge system, Indian knowledge system. Second, incentives such as prizes for outstanding poetry in prose and Bharatiya languages across categories will be established to ensure vibrant poetry, novels, non-fiction books, textbooks, journalism, and other works in all Bharatiya languages. This is particularly relevant. Your university is Urdu University, and this is NEP also talks about all national languages. Of course, Urdu is very much part of that. There is a knowledge system available. There are insights available. And we interact with the PhD scholars. And if you look at the research process which takes place these days, we all start with the literature review. That is required. I mean, we may not start, we may start with the real life problem and then go back to the literature. All that is both the ways it is possible.
Probably second way is will ensure more utility and relevance of the knowledge knowledge we ever do. But even if we start with the literature, because most of us, our students and scholars, and their literature is primarily, this survey comes from the internet. It can EBSCO, World, database, psychiatric, other databases. There are so many places where it's or sometimes even thousands of journals are integrated. So we use those databases, or we to start with we use Google. But eventually we have to database or some journals, their website or database website, curate journals. Because this method is considered and it is taken as a default method of literature review, we miss out on that literature which is prevalent, much prevalent in our society, different places, but which is not has its way to the end. If the manuscript is only curated, if it is saved, it is not archived in the form where it is part of the archives and it is kind of taken from the, it is traceable based on its content, based on its language, not just based on its picture. We will not be able to get that. That is not, and that is not visible consciously on the internet. Our researchers, actually most of our researchers, miss out on that. So along with the contemporary literature review, which we anyway do, and which is most of that is anyway available in the on the internet, we need to identify the physical copies and the physical resources of the system, maybe in the form of manuscript or maybe in the form of the books. Great service is done by archive.org, which includes Indian Archive and archive.org, which includes a lot of material on the about the books on the Bharatiya knowledge. For harnessing the Bharatiya knowledge system, proficiency in Bharatiya language is very important, and this point is also mentioned in NEP. This talks about harnessing, developing the proficiency of our students in multiple Bharatiya languages. 3-language formula can be implemented in more systematic way, in a more rigorous way, where people not only take the language which are convenient to them, but they take language which can open up a new insight, new doorway to the knowledge system of other related cultures. All languages are sources of knowledge. Different words in any language capture the word of that society and that culture. Etymology of those words can reflect the worldview and can reflect the insights captured in those words. But if we are connected with the language, we will be able to insight of the which is insight word. So that's why we emphasize on the languages. If we look at the diversity of the Bharatiya knowledge system, that is also immense. We have literature and not minor few books. There's a whole body of literature available on astronomy, physics, mathematics, surgery, medicine, metallurgy, toxicology, geography, Ayurveda, yoga, management, and of course architecture. These knowledge systems, as I shared, are not only related to their core area, but they reflect on something which are connected to these knowledge systems.
For example, Ayurveda is not only talking about if we study Ayurveda, we not only get the idea about how to set, also give idea how this body functions. It can give a different perspective of the of of the human life. Similarly, when we talk to yoga, it is not about which and which are helpful for concentrating our mind or dealing with certain health situation. It also gives us idea about how to build the logic, how to present an idea in a system research based rigorous way. We look at Patanjali Yoga Sutra, we not only get the idea of about how this mind functions. Because when in the very beginning, Patanjali Yoga Sutra says the Nirod is cessation of patience. It has to explore what is mental. And in that process, it has explained, and it has explained how the mind functions. There are Krishna vrittis, these Aklishta vrittis, control Krishna vrittis, how to achieve the constant mind, the quality of mind, chipta, vikshipta, ekagra, niruddha, all that description has to follow. So Yoga Sutra is not only about Ashtam, it is only about asana, samadhi, is most in the Yoga Sutra is dedicated to how this mind thinks and how it can be that how it can be made focused, how can what is the mind called. The same way, when we look at Shastra, Arthashastra is not governance. Governance subject that is probably ultimate delivery. But to explain that, how science of well and particular social well-being. And in order to explain the governance, there should be the Constitution, Mantri Parishad, should be the process of text, what text should be collected from, transaction should be collected, all are given. That is the main of the Arthashastra, and that's how we know about. If you look at the Arthashastra, it talks also. It has to talk about how the individual self, how they should connect to society, and how the human psyche, individual psyche, is connected with push. Look at the most sutra of Arthashastra. What is it? Says Sukhasya Moolam Dharma, Dharmasya Moolam Rajya, Dharmasya Moolam Artha, Arthasya Moolam Rajyam, and Rajyasya Moolam Indriya Jaya. In the contemporary, at least the management education, somehow implicitly we convey that Sukhasya Moolam Artha. But Arthashastra says that Sukhasya Moolam is not Artha. Sukhasya Moolam is Dharma. Sukhasya Moolam Dharma. If I am aligned with myself, and if what I am doing is aligned with the existence, that gives us Sukha. Dharyet iti dharma and dharyet iti dharma. That which upholds and that which has to be upheld. Both are the meaning of dharma. Dharma is realized within, dharma is realized without. That is the source of Sukha. And where the resources feature into it. Why we have to, before it talks about artha, before it talks about resources, before it talks about prosperity, it talks about what is the purpose of prosperity. We can very easily convey the idea, which may sound very complicated, looking at the existing conversation. Sukhasya Moolam Artha, that's
most likely implicitly certainly we talk about these. सुख कैसे मिलेगा? रिसोर्सेज होंगे, नीड सेटिस्फेक्शन होगा तो सुख मिलेगा. बट दिस सूत्रा सेज दैट सुख रिसोर्सेज से नहीं मिलेगा, धर्म से मिलेगा. और अर्थ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थ? अर्थस्य मूलम धर्म. अर्थ is important because that is dharmasya moolam artha. To perform dharma we need resources. There has to be some self control. It should not be imposed, but it should arise from our understanding, our alignment with the dharma. And the translation of dharma, our mentor Mukul Kanetkar ji says, is nothing but sustainability, and looks logical, because that which upholds, that which has to be upheld, that is the sustainability. So what I'm saying is, when we look at the different, similarly, if we talk about medicine, if we look at medicine science, it not only talks about aushadhis, it not only talks about the diseases, it also talks about, it has to talk about how to keep the mind happy, because lack of happiness is also cause of many diseases. When we talk about physics, it not only talks about instruments, it also talks about how this universe works. When we talk about astronomy, we not only talk about horoscope, we also talk about movement of the planets, and how to calculate the time, and how to forecast weather system. And if weather is not seemingly how it should be, then we can understand there are probably some externalities which are disturbing the weather. So what I'm saying is that there is an apparent knowledge system which is the main deliverable of that text, but underlying that main deliverable, there are other knowledge system also, and that's why the Indian knowledge system, the Bharatiya knowledge system, like any other knowledge system, is integrated system. If we read that, if we try to convey that in a piecemeal way, we will miss out on the real strength of this. Why it is important to talk about all this? It is important to talk about all this because it gives certain things. Indian knowledge system, Bharatiya knowledge system talks and give, number one, practices. There are so many practices available. Yoga is a practice. Dincharya is a practice. Ritucharya is a practice. So, lot of practices are available. Lot of such practices, how we prepare food, what kind of herbs are put in the food. These are also daily practices which have become part of our daily life. Professor Anil Gupta, recently he is retired and is still associated with IIM Ahmedabad. He has set up an excellent innovation center, and one of his many fantastic activities he used to conduct, and still he conducting many of those. One teaching method he used to follow was the Shodha Yatra. Shodha Yatra meaning the research journey, where he would go in some outskirts, in some direction in India, and trace some of the practices which are sustainable, which are adaptable for the country, which are good for the individual health, for the planetary health, or for doing certain things. In one of the Shodha Yatras at some place, he organized a culinary competition of the among the ladies in that region. So the village ladies would they prepared food, they prepared certain cuisines and brought. Only request was they had to explain what all they put in that
using in that dish. That was that's a simple thing. There were so many other things. Every year for I think 10, 15 years he did the Shodha Yatra and did many of such research studies, which are basically field research studies to look at what are the interesting teaching practices about water harvesting, about agriculture, about doing some agriculture related tasks. So this is one example, and he shared that when he looked at the dishes and the ingredients, it was so very well aligned to the climate of that place, and that has had natural capacity, that has a capacity to heal some of the ailments which were common in that area or which were common in particular climate. So practices are also spread out. We need to trace the practices. Then comes perspective. We may not adopt certain things directly, but it can give us perspective. How to look at things. Life can be looked. I am from the management, so I can give example of management more comfortably. There is a whole literature of motivation theory which are based on need-based perspective. What it says is that motivation is satisfaction of need. But if we look at the Indian tradition, it talks about Rina-based perspective. Life is not unending journey to satisfy one need after other. Life is a process of repaying the debt as well. The debt we have from the rishis or from the sages or from the intellectual tradition. We have received the knowledge which we are benefited. So by spreading knowledge, we have to repay the rishi rent. Then there is a pitra rent, and there is a bhuta rent. Bhuta rent means we are indebted to all the organisms in the world because they are there, so we are there. Our existence is dependent on many other forms of existence. So this is the perspective. This is just an example of perspective. It can give a perspective about how to look at life, how to look at earth. For example, there are traditions, not only Bharatiya tradition, there are some other traditions also which look at earth as a unit. They call it Gaia. So Gaia is nothing but a perspective, and which is very close to what we call systems thinking. Looking to earth not as just a habitat, and looking at earth divided in the different spheres, looking at earth as one unit, one cohesive integrated system. If we look at earth like this, we will approach many problems very differently. Probably, had we looked at earth like Gaia 100 years ago, we would have developed a very different kind of industries. We would have developed very different ways of generating prosperity. We would have developed different ways of governance. How to achieve earth, how to generate resources, how to generate money, we would have done very differently had we looked at earth as Gaia instead of combination of multiple nations, so many political units. So knowledge system can provide the perspective. Knowledge system can also provide concepts. There are so many untranslatables. Those untranslatable words, we do not do great service by translating them in English. Many times their essence is lost. We can retain some of those original words because they retain certain worldview within. I can give only one example, two examples. One is Shraddha. Now, Shraddha is not equivalent to faith. Faith is belief system. Shraddha is a reverence to know
and have a trust that something is there in this. That is essential quality, the first situation or prerequisite to attain knowledge. A beautiful example, Professor Bhavuk has really developed it well. There is a concept called lajja. That's a cultural concept. आज नवरात्रि शुरू हो रही है, दुर्गा सप्तशती का हम में से बहुत लोग पाठ भी करते होंगे. उस पाठ में देवी का एक नाम आता है लज्जा रूप. वो एक देवी की क्वालिटी है लज्जा. अब आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो शेम होगा या गिल्ट होगा. लज्जा तो शेम भी नहीं है और गिल्ट भी नहीं है. शेम इज अ नेगेटिव इमोशन. It constricts ourselves, and guilt is also the perpetuation of your thought about doing something wrong in the past. लज्जा वो भी नहीं. पॉजिटिव टर्म्स में भी यूज की जाती है. जब हम कहते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया, मुझे लज्जा क्यों नहीं आई. तो लज्जा is a term which indulge us, which promote us, which inspire us to do what is karaniya and prevents us to do karaniya. There are so many examples like this. What is karma yoga? How the action can be yoga? Can we say karma yoga is equivalent to action yoga? We cannot say, because when we say karma yoga, it doesn't talk about bodily action alone. It talks about mental action as well. And we have done some systematic work on karma yoga, and we found that karma yoga is combination of these constructs. We have developed scales, instruments. We have looked at its impact on the workplace. Karma yoga is not action yoga, because when we look at action, manonigra will not come in action, but manonigra is part of karma yoga. Sense control, samabuddhi, equanimity of mind, phalasha tyag, not sacrifice of the fruit but the asha of the fruit, because karma yoga says that there is a quality of emergence, daiva. So for any action to give some fruit, there are 5 factors. Adhishthan, what is the purpose of the action? Karan, what are the instruments being used? Cheshta, what efforts are being made? There is also called daiva. In spite of doing everything right, even after doing everything in the best way, something else can happen. The outcome may not be what you thought about. So in that situation, accepting that there is a daiva in the system's thinking, we call it emergence, quality of emergence. The living system has the characteristic quality of emergence. So alasha ka tyag, and arising from that comes, what is my swadharma, what is that I can offer to the world, what is I am good at, by doing which I lose the sense of time. But that is also not sufficient. That is also not the completion of the karma yoga. Karma yoga completes when we offer our swadharma for the lokasanga, for the world maintenance. So when we say karma yoga, it has all these variables that can be totally missed out if we try to concentrate, if we try to translate this karma yoga as equivalent to vocational. It cannot capture, it will not convey all this, which makes the karma. There are a lot of concepts like this. Shad Sampatti, Brahma Vihar. There are so many concepts which can be presented in the scientific language, which can be harnessed, which can be understood, and based on which empirical studies can be done. And then there are some working models available. Hydrology, there are a lot of working models. Ayurveda, Ritucharya, Dincharya are working models. There are working models about in the process of sanskar. There is a very interesting work done in
in the in BHU by Professor Rajbali Pandey in 50s about socio-cultural psychological interpretation of the sanskars, 16 sanskars. What is their role? It is not the religious uh, uh, dogma. It is not only a ritual. There is some meaning which is social, cultural, and psychological in nature. We can trace that and adopt those models. Interestingly, the first handbook of Indian psychology in 3 volumes were written by Professor Yadunath Sinha in 40s. The work on Sanskar, which I am talking about, was done on 50s. Work on Samadhi and when the physiological activities are equivalent to death, still people can survive. So the notion of prana becomes very useful over here. How can you explain when the physiological activities are equivalent to the dead, but person is still surviving? We have to assume something like prana, which is managed through pranayam, which is reflected in the prana, apana, different types of prana. We have to have this perspective to explain why biologically person should be dead, but if it is still active. There has been experiments like this. The very first education committee, which is called Kothari Committee, it was formally it was named something else, but the Kothari Committee was the first committee, very popular, everybody knows about it. The son of Professor Kothari conducted that experiment, and this was published in 71. So interestingly, Indian knowledge system and these things were researched, more thoroughly talked about at the time of independence, perhaps 30 years ago, 40, more 50 years ago. We have not taken it forward from. We have not built on this. We have gone too much towards towards the so-called contemporary Western knowledge. I don't have any problem with the Western knowledge system. We all are the beneficiary. I am certainly beneficiary of the Western knowledge system. What I'm saying is, Western knowledge system also has not stopped evolving itself. So why we should not continue to evolve the Bharatiya knowledge system? In that process, dialogue can happen. In that process, both the knowledge system can be enriched, and in that process, life itself can be enriched. In this process, ultimately, I hope that someday we will develop the thousands and thousands of bridges where different knowledge systems, different worldview can learn from each other, can enrich from each other, and that's a basic notion of the dialogue. What is the dialogue? Dialogue is knowing the worldviews. You share what is your worldview. One knowledge system shares its worldview. Another knowledge system shares its own worldview. In this dialogue, at the end of it, both of the worldviews are transformed. But that dialogue will not be possible if we do not build on Bharatiya knowledge system. Otherwise, we will always remain follower. If we want to become the theory builder, instead of just remaining theory testers, we need to embrace in education and research what is Bharatiya knowledge system, and in that process we will be able to better dialogue with the so-called contemporary modern knowledge systems. In that process, whole world will be benefited, we will be benefited, and we will be able to contribute to the other knowledge system in other society, which will be the ultimate benefit for everyone. So thanks very much again to the organizers for giving me opportunity to share these thoughts. These are not mine. All what I have shared is what I have received from my teachers and what I developed with the very bright, committed students. So my gratitude to them as well. Thanks. So many thanks to you, Professor Ashish Pandey जी. मैंने आपके अभिभाषण के पहले, आपके उद्बोधन के पहले जो कुछ भी आपके लिए यहाँ से कहा था,
आपने अपने उद्बोधन के द्वारा उन सारी बातों को यहाँ से सिद्ध कर दिया है, उसमें कोई भी संशय की स्थिति नहीं है। ऐसे आपने जितने अच्छे तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान प्रणाली और एनईपी में उसका क्या महत्व है या किन तरीके से हम लोग शोधों में उसको आगे ले जा करके बात कर सकते हैं, उस पर आपने अपना उद्बोधन यहाँ पर दिया। उसके लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम लोग किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, और उसमें अगर शब्द बदलता है तो उसके एसेंस भी बदल जाते हैं। और आपने बड़ा ही समय परक उदाहरण भी यहाँ पर दिया आज इस नवरात्रि के अवसर पर, जहाँ पर हम लोग ये कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और वहाँ पर अगर हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लज्जा के लिए कोई शब्द ऐसा नहीं आ सकता जो इसको बिल्कुल एज इट इज़ रखता हो। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है और सभी विद्वज्जनों का ये मानना है कि जो देश, जो राष्ट्र, जो कबीले अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं वो बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। तो हमें किसी न किसी रूप में अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपनी ज्ञान परंपराओं को साथ में रखना है, जिससे हम आगे और तरक्की कर सकें, जिससे हम लोग चीज़ों को आगे ले जा सकें। एक हसन फतेहपुरी ने बहुत पहले एक कपलेट कहा था, एक शेर कहा था। हसन फतेहपुरी का शेर, ये शेर तो हसन फतेहपुरी का नहीं है। राइट, हसन फतेहपुरी ने बहुत पहले एक शेर कहा था कि हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से। हाल यानी कि आज का समय, मुस्तकबिल यानी भविष्य, और माजी यानी कि हमारा भूतकाल, हमारी संस्कृति, हमारा पास्ट। हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। इसका मतलब अगर हम लोग अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को आज से जोड़ करके रखते हैं तो हमारा विकास, हमारा डेवलपमेंट, हमारा भविष्य निश्चित तौर पर बहुत अच्छा बना रहेगा। और जो बात आपने कही कि सुखा मूलस्य धर्मा, धर्म से ही सुख का मूल है, सुख का वित्त से कोई सीधा संबंध नहीं है। अगर हम लोग कल प्रोफेसर अरविंद दीक्षित जी ने भी अपने अभिभाषण में ये बात कही थी कि धर्म के 10 लक्षणों के बारे में उन्होंने बताया था, और उन्हीं से सुख की उत्पत्ति होती है। सर, अगेन सो मेनी थैंक्स फॉर यू प्रोफेसर आशीष पांडे जी। इस बीच में हमारे साथ हमारे इस पूरे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट प्रोफेसर B.A. चोपड़े साहब, कल वीसी साहब कुछ नाम लेने में वो हो रहे थे, चोपड़े साहब हमारे साथ जुड़ चुके। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। उनको हम लोग इस पूरे कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सत्रों में, विभिन्न अवसरों पर सुना है और साधिकार सुनते भी रहेंगे आगे। इसके लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां उनके लिए। हमारे इस सेशन में एक और वक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनको हमने कल भी एक सेशन में सुना था, और इस सेशन में भी कुछ उनके पास जिम्मेदारी है कि वो बताएंगे। योगेश पवार जी, जिनको कल भी हम लोगों ने सुना था, वो वास्तव में को फाउंडर और सीईओ हैं डिजिटल एड के, कोच हैं बिजनेस एक्सीलेंस को लेकर के, उसके कोच हैं किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो 3 सेक्टर प्रभावी कहे जाते हैं मूल रूप से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और एजुकेशनल इंडस्ट्री जो है, उसमें लीडरशिप रोल्स क्या होने चाहिए और किस तरीके से उनको प्ले करना चाहिए, उस पर आपकी जो तकनीकी जानकारी है उसके आप माहिरों में से हैं। मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आप यहां पर आएं और अपना उद्बोधन दें। Good morning, friends, and the respected members of the dais. So thank you again giving me opportunity, and I could see a lot of participants are here and excited to see the evaluation of OB
Okay, so yesterday we have covered on a very surface level the concepts of evaluation. So in NAC and even in NEP 2020, evaluation is also playing an important role. Okay, and that evaluation process somehow, because of certain criteria, certain methodologies, certain processes described in the various policies or guidelines, so it sounds that it is quite difficult to implement, quite difficult to adopt for my educators. Okay, so मैं एक प्रयास करना चाह रहा हूँ अभी आप सभी के लिए कि ये किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जिसमें नैक को भी मैं इसके साथ जोड़ना पसंद करूँगा. नैक के कुछ जो स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं, जैसे टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन का जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, या क्राइटेरिया नंबर 2.7 2.6 जो है, दैट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स, राइट. सो इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ जोड़ने की आज आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ. इस तरह का जो सिस्टम है, इस तरह का ये जो सॉल्यूशन है, दैट हैज़ बीन implemented, adopted by various different educational institutes, autonomous colleges. Okay, so almost 17 plus educational institutes are already using this platform for simplifying their operations of evaluation, governance, management and administration of educational institutes, right. कल मेरे कुछ जो कॉन्सेप्ट्स थे उसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश आज कर रहा हूँ, because I could see some of new friends have joined this session today. So this is the agenda for session day 2, session 3, and the topic is hands-on practice session on OB evaluation and next जेन एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म. सो दिस नेक्स्ट जेन एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको सरफेस लेवल पे इंफॉर्मेशन दूंगा. और अभी का जो ये सेशन है, इस सेशन में आप मेरे साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए जुड़ सकते हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ पे जो बारकोडेड कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, हाँ, वो मुझे चाहिए थोड़े से. हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सेशन के लिए इस तरह का ये जो पेपर है, ये मैं अभी जो एजुकेटर्स हैं इस हॉल में उपस्थित, उनको मैं शेयर कर रहा हूँ. इसको यूज़ करके आप जो कुछ ऑपरेशंस मैं सॉफ्टवेयर में आपके सामने कर रहा हूँ, ओके, उसको आप अपने लैपटॉप में कर पाएंगे. यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है ताकि आप अपने मोबाइल में उसको लॉगिन कर सकें, ओके. और यहाँ पे नीचे जो है ये URLs दी गई हैं, वेबसाइट के एड्रेसेस हैं, और जिनका एक कॉमन यूजर नेम एंड पासवर्ड है, जिसको आप यूज करके लैपटॉप से भी मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, राइट. ठीक है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट.
now you are acting as a controller of examination of your own institute. तो इस तरह से ये लॉगिन जो है ये क्रिएट किए गए हैं. स्मॉल 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 में OBE राइट. आपके लॉगिन करने के बाद जो ब्लू कलर का स्क्रीन आ रहा है, ब्लू कलर की एक स्ट्रिप है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल 3 लाइंस हैं. उस लाइंस को आप क्लिक करेंगे और लास्ट वाला ऑप्शन है OBE. आप मेरे साथ इसको देखिए. लॉगिन करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ रहा है. आपको आगे है. All are with me? No. It's already there in your mobile phone. जो Google का जो पहला स्ट्रिप आता है ऊपर सबसे होम स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आ जाता है. और लास्ट में कैमरे का ऑप्शन है. स्टूडेंट्स कैन यू हेल्प प्रोफेसर्स. Can you help them? Google Lens से QR कोड स्कैन करने की है. हो गया. Anyone is facing challenge from the professors? हाँ जी. यूजर नेम और पासवर्ड स्मॉल लेटर्स में OBE. हो चुका है. ग्रेट. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग OBE का जो पूरा सेटअप है उसको देखेंगे और जो रिपोर्ट है अटेनमेंट कैलकुलेशंस का वो किस तरह से जनरेट होता है स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ कर सकते हैं या आप डायरेक्टली स्क्रीन पे भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्लिक ऑन OBE.
Okay. Any question related to this report? जब तक इंटरनेट शुरू होता है हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर। आपको रिपोर्ट में एक कॉलम दिखाई दे रहा है जहां पे प्रोग्राम आउटकम के साइड वाले कॉलम में लिखा हुआ है करेक्टिव एक्शंस, राइट? सो सिस्टम में आप करेक्टिव एक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं which will get included directly in this report. करेक्टिव एक्शंस आपको कब डिफाइन करने हैं, राइट? करेक्टिव एक्शंस डिफाइन करने का क्राइटेरिया यह है कि जब आपका अटेनमेंट लेवल आपके डिफाइंड थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करता है, उस वक्त आप स्पेसिफिक करेक्टिव एक्शंस डिफाइन कर सकते हो सिस्टम में ही, राइट? सिस्टम इस लेवल तक स्मार्ट है कि वो स्टूडेंट की अटेंडेंस क्या है, इस बात पे गौर कीजिएगा। इंटीग्रेटेड सिस्टम होने के कारण जब आप अटेंडेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टूडेंट को, अगर किसी स्टूडेंट को कम मार्क्स आए हैं तो सिस्टम इसको भी कंपेयर कर सकता है कि उस सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट की अटेंडेंस कितनी थी। सो करेक्टिव एक्शन डिफाइन करते वक्त इस इंफॉर्मेशन का आपको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। आप समझ रहे हैं इस बात को, राइट? करेक्टिव एक्शंस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। हर बार करेक्टिव एक्शंस ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर्स को ही लेनी है। कुछ करेक्टिव एक्शंस ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स के साइड भी इंप्लीमेंट होती है, बिकॉज दिस इज इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग बोथ, करेक्ट? इसीलिए आई एम वेटिंग फॉर इंटरनेट करेक्टिव मेजर्स। तो करेक्टिव मेजर्स जो है वो आप डिफाइन करते हो आपके प्रोग्राम आउटकम्स अगर अचीव नहीं हो रहे हैं उसके लिए, और कोर्स आउटकम अगर अचीव नहीं हो रहे हैं उसके लिए। Yes, yes, yes. So I'm waiting for internet to start on this screen so that I guide you one by one. Pardon? Theoretically, okay.
university to university, right? Wait. Penis nigger, nigger. उस वक्त आप अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे 12 प्रोग्राम आउटकम्स अभी डिफाइन किए गए हैं और I have a question. 12 प्रोग्राम आउटकम्स डिफाइन किए गए हैं और टोटल 3 प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम डिफाइन किए गए हैं। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोग्राम आउटकम सिस्टम में डिफाइन करना। चलो, ये जो बैक का बटन है ब्लू स्ट्रिप पे, बैकवर्ड एरो, इसको फिर से एक बार कौन सी प्रोग्राम आउटकम की जो स्टेटमेंट्स है ये इंस्टीट्यूट को डिफाइन करनी है। बाद में करेंगे, राइट? अभी मैं फिर से डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के बाद पाई चार्ट आएंगे। हाँ, यस, ये एक्चुअली काफी लोग इंडिया में जो एनबीए की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं, राइट? अभी उस गाइडलाइन में 12 प्रोग्राम आउटकम्स और 3 प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स दिए गए हैं, इसीलिए ये प्रोसेस ऐसे ही चलता आ रहा है। बट जरूरी नहीं है, आपके प्रोग्राम्स इस तरह से डिजाइन किए जा सकते हैं जहां पे प्रोग्राम आउटकम्स 3 ही है या प्रोग्राम आउटकम 10 है और 5 प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स, या ऐसे कुछ कोर्सेस आप डिजाइन कर रहे हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, जो डायनामिक है, तो उसमें प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम ज्यादा हो सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग जाएंगे उस, अभी हमने जहां पे क्लिक किया था पेंडिंग पीओ सेटअप, उसके नीचे आप क्लिक करेंगे पेंडिंग सीओ सेटअप, पेंडिंग कोर्स आउटकम सेटअप का जो बटन है डैशबोर्ड पे,
यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ओबी को क्लिक करने के बाद ये जो स्ट्रिप आ रही है, यहाँ पे 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स में आपको क्लिक करना है। ओके, इस तरह का स्क्रीन आपके मोबाइल पे आएगा। मैं फिर से एक बार आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आप आ गए सभी लोग, है ना? राइट हैंड साइड में बल्ब का चिन्ह है जिसके बाजू में 3 डॉट्स है जिसको आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे मैनेज ओबी एंड सब्जेक्ट कोर्स मैपिंग, जिससे आप कोर्सेस और प्रोग्राम को एक दूसरे के साथ मैप कर सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई देगा। यस, पेंटिंग पीओसीयू मैपिंग सेटअप एक ग्राफ है डैशबोर्ड पे। उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्लिक करना है, बटन है। फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। पेंटिंग पीओसीयू मैपिंग सेटअप में एक गो टू पीओसीयू मैपिंग सेटअप, इसमें क्लिक करने के बाद आपको लेना है डिजिटल यूनिवर्सिटी। पहला ऑप्शन है डिजिटल यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है एकेडमिक ईयर, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन जो है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो पहला सब्जेक्ट है आप ले लीजिए। नाउ फेच, जब
क्या क्या है, कोर्सेज क्या है, कितने स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देने वाले हैं, उसका असेसमेंट पैटर्न कैसा है। कुछ कॉलेजेस में 80-20, कुछ कॉलेजेस में 75-25, अलग अलग एग्जाम पैटर्न्स फॉलो होते हैं। सो फ्लेक्सिबली हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पे भी एक्टिव का जो ग्रीन कलर का टेक्स्ट आ रहा है उसके साइड में आपके पास 3 बटन्स है, उसमें से आपको 5 नंबर का जो स्टेप है आ रहा है, मैनेज क्वेश्चन पेपर, क्लिक ऑन दैट। ओके, वहां पे आपको एक अभी पॉपअप आ रहा है कि एग्जाम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट। तो एग्जाम स्टार्ट होने की वजह से क्वेश्चन पेपर को बदला नहीं जा सकता, ठीक है। बट क्वेश्चन पेपर है बैकएंड में, उसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये जो ऑप्शन है ये एक्चुअली आपने जो कोर्स आउटकम्स डिफाइन किए हुए हैं, इन कोर्स आउटकम को आपके अलग अलग क्वेश्चंस के साथ जोड़ के सिस्टम खुद ही उसका एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर सकता है। ओके, क्वेश्चन पेपर जब मैं मेरा लैपटॉप कनेक्ट करूंगा तो एक डाउनलोडेड क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा पाऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन पेपर को कैसे बनाता है, टीचर्स का काम खत्म हो रहा है, एआई कीपैड यूज करिए, टीचर्स का काम खत्म हो रहा है। ओके, देखिए दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर पैटर्न हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने अभी डिफाइन किया हुआ है 6 सेक्शंस हैं। ऐसा हो सकता है कि 4 सेक्शंस हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैरी करें, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस वैरी करें। इस तरह से एक मॉडल सेट करने के बाद सिस्टम उसके क्वेश्चन पेपर्स जनरेट कर सकता है। अभी इसका बेनिफिट क्या है, ये एक ऑर्गेनिक नॉलेज ग्रोथ है किसी भी यूनिवर्सिटी में। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर्स के लिए डेटा सिस्टम में आप इंपोर्ट करते हैं, उस वक्त सिस्टम इसको प्रिजर्व करके रखता है, और कोई भी क्वेश्चन जब तक उसकी क्वेश्चन बैंक खत्म नहीं हो जाती तब तक उस क्वेश्चन को अगले किसी भी क्वेश्चन पेपर में रिपीट नहीं करेगा, राइट। तो दैट विल गिव यू अ मोस्ट टफ पेपर, राइट। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेनिफिट है कि जैसे आप भी कभी क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो एटलीस्ट पिछले 4 या 5 क्वेश्चन पेपर चेक करके ही क्वेश्चंस उसमें ऐड करते हैं। बट यहाँ पे सिस्टम को पता है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को भी हम लोग वैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, आपके इजी कनेक्ट के लिए हर क्वेश्चन के सामने उसका कोर्स आउटकम लिखा हुआ आ रहा है। एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में इस तरह से छपेगा नहीं, राइट।
मोबाइल में यूज कर रहे हैं ये मोबाइल ऐप ही है। अभी जब हम लोग मोबाइल ऐप्स की बात करते हैं तो उसे नेटिव मोबाइल ऐप्स कहा जाता है जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल होती है। अभी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से प्रोग्रेसिव वेब ऐप टेक्नोलॉजी बिल्ड हुई है, ये गूगल की पेटेंटेड है, तो गूगल इसको फ्रीली ऑफर करता है, राइट। और मोस्टली जितने भी बैंक्स हैं अभी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव वेब ऐप में मूव हो रहे हैं, राइट। ओके, हमें जाना है एग्जाम में, एग्जाम में जाके फिर
इवैल्यूएटर्स को ऑफर किया जाता है। सो इवैल्यूएटर्स जब इसको चेक करेंगे उस वक्त एक कॉन्सेप्ट होता है मास्किंग एंड डीमास्किंग ऑफ आंसर बुक्स, राइट? ये प्रक्रिया भी हमने अवॉइड कर रखी है बाय इंट्रोड्यूसिंग क्यूआर कोड ऑन आंसर बुक्स। तो जब आप इसको आंसर बुक का इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है तो इवैल्यूएटर को सिंपली जैसे आप पेटीएम का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं उस तरह से उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा अपने मोबाइल से और मार्क एंटर कर दीजिए। इस तरह से ये मार्क सिस्टम में फीड हो जाता है। दैट आई एम शोइंग यू ऑप्शन नंबर 2 अगर ऑन स्क्रीन असेसमेंट के लिए नहीं जाना है तो। बराबर है? इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे आपका जो एग्जाम का जो प्रोसेस है, रिजल्ट जनरेशन का प्रोसेस जो है ये 50% से रिड्यूस हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो 100% इंप्रूव हो जाती है बिकॉज एवरी ऑपरेशन इज हैंडल्ड बाय इंडिविजुअल लॉगिन। बराबर है? ओके। एनी क्वेश्चन इन दिस? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इसको रिपीट करते हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ? हाँ हाँ हाँ। यस, ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन में मैं फिर से एक बार करता हूँ इसको। ये देखिए एग्जाम में मैं गया हूँ। एग्जाम में जाने के बाद यहाँ पे ऑन स्क्रीन असेसमेंट का ऑप्शन है। क्वेश्चन बैंक हम नहीं करना चाहते हैं कि क्वेश्चंस वैल्यूज करते हैं सेमेस्टर और सारी चीजें बदलती रहती चलेगा। हाँ, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? ओके, हम ये नहीं चाहते पूरा सब कुछ सिस्टम पे। ओके 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 डायनामिक चेंजेस करना है। ये भी पॉसिबल है, इसलिए भी का बेसिक पर्पस भी फुलफिल हो रहा है। आप फाइन करेंगे क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बैंक नहीं करना चाहते। कैसे? ओके, अगर क्वेश्चन बैंक सिस्टम में अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। जो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बताया हुआ है जहां पे आप हर क्वेश्चन पेपर को असेस करने के बाद सिस्टम को ये सिर्फ पता होना चाहिए कि अभी मॉडल 2 है, इसमें आप क्वेश्चन लेवल ओबी इंप्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं, इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं ओबी का, या सब्जेक्ट लेवल पे करना चाह रहे हैं। अगर आप सब्जेक्ट लेवल पे करना चाह रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट के मार्क अपलोड करने हैं। अगर आप क्वेश्चन
टेबल पे लिखा गया है कि आपने कौन सी लेवल अचीव की है, अटेंडेंट की कौन सी लेवल अचीव की है, और कितने स्टूडेंट्स आपके अबव थ्रेशोल्ड्स हैं। सिस्टम ने ये भी अपने आप इवैल्यूएट कर लिया कि आपके कितने स्टूडेंट्स जो हैं ये अबव थ्रेशोल्ड है। बराबर है? एवरीवन इज विथ मी? एनी क्वेश्चन टिल दिस? वैलिड स्टूडेंट काउंट कहाँ पे आप देख रहे हैं? हाँ, ऊपर जाइए। ओके, देखिएगा यहाँ पे आपको शायद ये इस तरह से आप देख रहे हैं वैलिड स्टूडेंट काउंट। ये वैलिड स्टूडेंट काउंट मतलब कितने स्टूडेंट एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं। ये वैलिड स्टूडेंट काउंट इसलिए भी मैटर करता है कि आपके एग्जाम में 100 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, उसमें से 10 एब्सेंट थे, तो 90 स्टूडेंट ही एग्जाम में बैठे। वैलिड स्टूडेंट 88 जो बैकलॉग के स्टूडेंट्स होते हैं वो ओबी अटेंडमेंट में कंसीडर नहीं किए जाते, क्योंकि ओबी अटेंडमेंट जो है वो एक ही बार कंसीडर होता है, राइट? ठीक है, ओके। तो वैलिड स्टूडेंट काउंट का मतलब समझ में आ गया? नो नो, इट विल वैरी, क्योंकि अभी डेमो दिखाने के लिए सारे स्टूडेंट्स ने
इन evaluations के लिए इसी सिस्टम को असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल के साथ भी जोड़ा गया है, ताकि असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिल रहे हैं वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके ओबी कैलकुलेशंस में कंसीडर करता है। ठीक है? ओके? एनी क्वेश्चन टिल दिस? I have one question. Yes, sir. Suppose if you devise a new question paper, Yes. like problem solving, or for example, I think data analysis, or interpretation, or I think it is a logical question, then how that kind of the question papers will be because it vary from situation to situation, Yes. paper to paper, from teacher to teacher. Yes. Yes. How then that question paper can able to prepare? Awesome. Awesome. देखिए ये हम सभी लोगों ने प्रैक्टिस भी किया हुआ है ड्यूरिंग कोविड सीजन। कोविड सीजन में आपकी जितनी भी एग्जाम्स होती थी, आप उस एग्जाम से पहले अपने एक क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बैंक्स क्रिएट करते थे, राइट? तो सिस्टम इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स है इसको कैटर करने के लिए कैपेबल है। बिफोर 2 days of exam, you can redesign your question paper, you can redefine your question paper, you can change the pattern of your question paper, you can add or delete questions of your question paper, you can add images, charts, graphs in your questions, because जब क्वेश्चन बैंक्स क्रिएट किए जाएंगे सिस्टम में, तब इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए कुछ केमिकल फॉर्मूलाज हो सकते हैं, इंजीनियरिंग में कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हो सकते हैं, इनको भी सिस्टम में ऐड करने की सुविधा दी गई है। You can use option of manage question bank in your mobile phone later on, जहां पे आप ऐड और डिलीट एडिट क्वेश्चन कर सकते हैं, मैन्युअली भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक को अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है? ये ऑप्शन दिया गया है। ओके, अभी इतना सब कुछ करने के बावजूद हमें इस तरह का डेटा शायद जरूरी होगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्टूडेंट लेवल का जो स्किल मैपिंग है वो सिस्टम ने अब तक कर दिया है, राइट? सो डू आई एक्सपेक्ट कि मेरे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टॉपर कौन है? ये भी डेटा सिस्टम ने देना चाहिए क्या? मेरे इंस्टीट्यूट का सब्जेक्ट टॉपर कौन है? मेरे फर्स्ट 3 स्टूडेंट कौन से हैं? बराबर है? और ये सारी चीजें कन्वेंशनल एग्जामिनेशन सेटअप में हम सभी लोग करते हैं, बराबर है? और ये बिना सिस्टम के भी पॉसिबल है। आप ऑलरेडी डिक्लेयर करते हैं कि सब्जेक्ट टॉपर्स कौन है, पहले 3 लोग कौन है, बट ये सिस्टम आपको ये आसानी से लिस्ट डाउन करने की ताकत प्रदान करेगा कि कौन से ऐसे 3 स्टूडेंट हैं जो इस सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा स्किलफुल हैं, बिकॉज स्किल्स आर नॉट लिंक्ड विद द मार्क्स व्हिच हैज बीन ऑब्टेन्ड ऑन द मार्कशीट। स्किल्स कैसे इवैल्यूएट हो रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर में अटेंड किए हुए हैं, उसके बेसिस पे हम एक स्टेटमेंट रिलीज कर सकते हैं इस सिस्टम से कि मेरे पास मोस्ट स्किलफुल स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये शायद टॉपर नहीं होंगे, शायद बोल रहा हूं मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सर ने कहा कि क्वेश्चन पेपर हमें डायनामिकली डिजाइन करना है मैन्युअली, राइट? तो आपने पूरा प्रयास करके क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जिसमें 6 सेक्शंस हैं, और उस 6 सेक्शंस में 6 ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल के 10-10 सवाल पूछे गए हैं।
रियल टाइम, बराबर है। शायद ये मैन्युअली करना थोड़ा सा तकलीफ दे हो सकता है, क्लटर्ड हो सकता है, बराबर है। इस तरह का डेटा अगर आपको हर एग्जाम के बाद दिया जाए, इस तरह का डेटा अगर आपको हर एग्जामिनेशन के बाद अवेलेबल हो, तो सबने कल के अपने टॉपिक में बात छेड़ी थी, स्लो लर्नर एंड फास्ट लर्नर्स। सो क्या मुझे रेडीली इस तरह का डेटा मिल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स के कौन से स्किल्स इंप्रूव करने के लिए मुझे इस आउटपुट का यूज करना है, बराबर है। सो डिजिटल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सिस्टम है जो मेरे प्राध्यापकों के साथ जुड़ के एक अच्छा नेक्स्ट जनरेशन बिल्ड कर सकते हैं, बराबर है। ओके, ये एक सैंपल है, ये एक सैंपल है। दिस सैंपल इज generated by the system, okay, question based OB assessment करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये नॉर्मल सी मार्कशीट है, बराबर है। सभी यूनिवर्सिटीज इसी तरह से मार्कशीट फॉलो करते हैं। यहाँ पे SGPA CGPA जो भी लेटेस्ट टर्म्स हैं इवैल्यूएशंस के वो यूज किए गए हैं। नीचे आप अगर देखेंगे तो टेबल है रिमार्क्स का, उसके अंदर स्टूडेंट के क्रेडिट अर्न्ड ऑफ लास्ट फ्यू सेमेस्टर्स, SGPA ऑफ लास्ट फ्यू सेमेस्टर्स इज गेटिंग प्रिंटेड। ये किस लिए है? ये कंपैरिजन के लिए है उस स्टूडेंट की खुद की कि हाउ ही इज प्रोग्रेसिंग। अभी ये कंपैरिजन जो है ये पिछले 5 साल का 4 साल का भी हो सकता है इंडिविजुअल स्टूडेंट का। ये कंपैरिजन अक्रॉस सेमेस्टर्स हो सकता है किसी डिपार्टमेंट का। ये कंपैरिजन हो सकता है अक्रॉस एकेडमिक ईयर्स आपके यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस का, एफिलिएटेड कॉलेजेस का।
मोबाइल फोन पे डाउनलोड होगी। This is very important when it comes to when your students are going abroad. वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया है। ये डिजिटल सिक्योरिटी है, डॉक्यूमेंट की डिजिटल सिक्योरिटी, राइट? मिसयूज करने का सोचिए, आप कैसे करोगे? मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। आप स्टूडेंट से एडमिशन लेते वक्त जेरोक्स मांगते हैं क्या? बराबर है? जेरोक्स आप ऐसे ही विश्वास करके अपने पास रख लेते हैं? नहीं, फिलहाल रख लेते हैं। बट नॉर्मली प्रोसेस ऐसा होता है कि ओरिजिनल के साथ उसको वेरीफाई किया जाता है, राइट? अभी ओरिजिनल के साथ वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट हैज टू कैरी ओरिजिनल कॉपी विद हिम, राइट? बट इस केस में ओरिजिनल कॉपी की जरूरत नहीं है। जो आपके मोबाइल फोन में अभी डिस्प्ले हुई है, ये यूनिवर्सिटी के सर्वर पे अवेलेबल कॉपी है। सो इस पीडीएफ में मैं भले ही चाहे जो कुछ चेंजेस कर दूं, जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पर सर्वर की कॉपी पे मैं नहीं करूं। So this is digital security being offered to various documents being generated by university. Yes, transcripts हो सकती हैं, ये सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स हो सकती हैं, बराबर है? So इस तरह का पूरा end to end evaluation process which is contributing to your policy of continuous comprehensive evaluation covering semester, mid-semester, assessments, oral, practical, assignment, projects, इन सबको एक साथ जोड़ के डायरेक्ट अटेनमेंट कैलकुलेशन, इनडायरेक्ट अटेनमेंट मॉडल, इन दोनों को क्लब करके आपका फाइनल अटेनमेंट जो है, ये सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो है वो सिस्टम बैकएंड में कर रहा है, आपको अपना काम करते जाना है। आपको क्वेश्चन पे आंसर बुक चेक करने हैं, उसके मार्क फीड करने हैं, आपको स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देने हैं, उसके मार्क्स फीड करने हैं। ये आप करते जाइए, सिस्टम बैकएंड में उसका पूरा आउटकम बेस्ड एजुकेशन के लिए आपने तो काम कर लिया है by delivering lectures in the classroom, by using the pedagogy techniques. अभी बात आती है इवैल्यूएशन की, जिससे ज्यादातर एडुक्रेट्स जो है वो थोड़ा सा दूर रखते हैं अपने आप को। तो वो काम इस तरह से कंप्लीटली सिंप्लीफाई किया गया, राइट? ठीक है? सो एनी क्वेश्चन फॉर मी? On this, any question for me? Thank you so much, Yogesh ji, for this very, very Thank you. dense session. We have time for a few paper presentations because a lot of candidates have shown interest to present their papers. So if there are no questions, then we can declare this particular session closed and make some time for paper presentations. तो अगर जिन लोगों ने अपना नाम यहाँ पे सबमिट किया है, जैसे शशिकला चौहान जी हैं, रिसर्च स्कॉलर, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं हमारे साथ। मैम, इफ़ यू आर प्रेजेंट इन द हॉल, प्लीज़ कम अप ऑन द podium to present your paper. I'll just quickly call out everybody's name. Mr. Lakshmi Narayan Yadav, if you are there in the hall to present the paper. Dr. Abdul Khuddus, sir, if you could please come. मैंने आपको पहले ही ब्रीफ कर दिया है कि we have around, अच्छा, ma'am is there. Okay. So, sir, we can first have her presentation and then yours. Ma'am, please keep it very concise and crisp. We have only 2 to 3 minutes. Thank you. Good afternoon,
all the respected dignitaries, professors, teachers, and my friends. I am Sashikala Chauhan, Research Scholar, Department of Education, University of Lucknow. Going to present my paper titled Learning Environment and Support, Way to Students' Happiness. As we know कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके आसपास उसकी पूरी सराउंडिंग उस तब से शुरू करता है लर्न करना, और जब ये लर्न करता है तो उस सराउंडिंग में जब आता है तो ही इज़ अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग, बट एज ही ग्रोज ओल्डर he understand and also learn from his surrounding, and the thing that is the most affect the learning is the student's surrounding. जब हम बात करते हैं, so whenever we talk about the surrounding in context of learning, we call the learning environment. Learning environment is a scholar, academician define this learning environment as social, physical, psychological, and pedagogical context in learning and which learning occurs and which affects students' achievement attitude. This is the concise definition of learning environment, and this other academician define the learning environment and include three components, basically the physical environment, psychological environment, and social learning environment. So this is the definition if we include a learning environment. And my second is support. The learning environment just related to support, because all learning environment provide the support to the student. Next, I will talk about the learning environment and support related to students' happiness. As NEP-2020 introduced with a new vision to provide education to each and everyone, quality education, and one thing that is new, it provide education, started to begin education of 3 years starting. So ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टार्ट किया इसने, तो ये क्वेश्चन की बात है कि क्या हम अपनी लर्निंग एनवायरनमेंट को उस तरह क्रिएट कर पाए हैं. अभी तक हम देख रहे हैं कि हम अभी तक फर्स्ट क्लास से लेकर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो ऐसे ही इतनी बेकार है कि जो इस तरह के स्टेजेस हैं जो बच्चों को तैयार नहीं कर पा रही. तो क्या एक अर्ली जो एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सही तरीके से लेके जाएगी, तो एक क्वेश्चनेबल है. सो बेसिकली दिस पेपर टॉक्स अबाउट द 3 क्वेश्चन इन कंसर्न प्रेजेंट कंटेक्स्ट. First, what is the status of learning environment and support system in the school at present? Second, does students' happiness affect the education? Sorry, is the question, does learning environment affect the students' learning? And the third question is, does learning environment and support system have any relation with the well-being or the happiness? So, as NEP 2020 talks about the Make India Global Knowledge Power, Make 2030 तक हम 2040 तक हम चाहते हैं कि वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट एजुकेटेड कंट्री बने. तो इस तरीके के ड्रीम में हम जब अचीव करना चाह रहे, सबसे पहले जो कि सबसे अधिक वैल्यूएबल फैक्टर है लर्निंग एनवायरनमेंट सपोर्ट दैट इज अवेलेबल फॉर आवर स्टूडेंट मस्ट बी कंसर्न एंड सी इन द, जैसे कि हमने देखा टाइटल में आउटकम बेस्ड लर्निंग. सो आउटकम नॉट ओनली कॉग्निटिव, लर्निंग इज 3 पार्ट, cognitive, affective, and psychomotor domain. So why we are NEP 2020 is consider all the factors. It talks about the well-being. It's all creative thinking, but the more focus is on cognitive. Still, NEP 2020 more focuses on cognitive. The need is just to focus on outcome-based. When we talk about the outcome-based learning, it must consider equally all the cognitive, affective, and psychomotor domain. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Now I will request Mr. Abdul Khuddus from Manu, Lucknow Satellite Campus, an associate professor in the Department of Arabic, to please present his paper. Good morning, everybody. My paper is in English. My topic is National Education Policy in India, a brief overview. It consists of 10 pages.
as I am given only 3 to 4 minutes. So I will just talk about little things in Urdu, since इस यूनिवर्सिटी के माकान और मायकून का एतबार करते हुए, लिहाज करते हुए समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो इसकी जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में चंद बातें आप लोगों के सामने रखूँगा. सबसे पहले तो मैं इस डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की इंटायर टीम और इस सेमिनार के ऑर्गेनाइजिंग टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना खूबसूरत, इतना डायनामिक प्रोग्राम सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें काफ़ी हम लोगों को मालूमात NEP के ताल्लुक़ से मिली. देखिए, बुनियादी तौर पर जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बस उसकी चंद जो बुनियादी चीज़ें हैं स्ट्रक्चर लेवल पे, वो मैं आपके सामने कोशिश करूँगा कि पेश करूँ. बुनियादी चीज़ जो है, हम लोग आज तक 10+2 जो स्ट्रक्चर है उसके आदी हैं, और हम लोग ये जानते हैं, मतलब प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट. अब ये जो लास्ट के 2 ये है टाइटल हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी NEP में. इंटरमीडिएट भी नहीं रहेगा, सीनियर सेकेंडरी भी नहीं रहेगा. ये सीधे 5+3+3+4 ये नया जो स्ट्रक्चर है होगा. तो इससे, इसके ताल्लुक से जो इब्तदाई तालीम के लिहाज से जो बुनियादी चीज़ें हैं, मेयारी तालीम, और उसके लिए जो चंद चीज़ें आपके सामने अब जो इस पॉलिसी के ताल्लुक से जो अहम पहलू है वो ये है कि 2030 इस पॉलिसी का टारगेट है कि 2030 तक एक GER होता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो. ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो आप सभी लोग समझते होंगे. ग्रॉस मतलब ये कि एक लेवल में जितने बच्चे को स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना होता है, अगर वो 100% जाता है तो उस 100% GER बोलते, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो. मतलब एक गांव में अगर 50 बच्चे स्कूल जाने के लायक है, अगर पूरे बच्चे जाते हैं तो वो 100% GER बोलते हैं. तो ये जो इस पॉलिसी का जो अभी जो प्रेजेंटली जो हमारा GER है इंडिया का, वो है 26.4, इसी तरह का राउंड है. जबकि अदर कंट्रीज में किसी में 70% है, किसी में 60% है, चाइना में शायद 65% है, अमेरिका में 100% है. तो जो जिस लेवल पे, ये सिर्फ ये है कि प्राइमरी लेवल की नहीं है, जो जिस लेवल पे है उस लेवल में अगर वो इनरोलमेंट होता है तो उसको 100% या जो भी है परसेंट है. तो इस पॉलिसी का जो बुनियादी मकसद है वो है 2030 तक 100% GER का हासिल करना है. ये एक बहुत अहम चीज़ है और इसके लिए जो कोशिश है गवर्नमेंट सतह पर और लोकल सतह पर की जा रही है. दूसरी बात जो है, जब बच्चा स्कूल से निकले, चाहे वो 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, वो पास उसके निकलने तक उसके पास एक स्किल ऐसा हो जिसके ज़रिए से दुनिया में, दुनियावी ज़िंदगी में कुछ करने का अहल बन जाए. दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये है. दूसरा ये कि इस पॉलिसी में जो बहुत तवज्जो दी गई है वो ये है कि बच्चों के ऊपर स्कूल का एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो मिनिमाइज़ किया जाए. बल्कि 5 क्लास तक तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं रखा है, और वो एग्ज़ाम आगे के जो इस लेवल पे जो एग्ज़ाम लगेगा वो एग्ज़ाम नहीं है सच, वो इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है कि बच्चों की मेंटालिटी. सर भी कल बात कर रहे थे, चोपड़े सर, और जो खास करके जो मनोज दीक्षित जी बात कर रहे थे. तो ये इसकी में जो है हम एग्ज़ाम प्रेशर कम होगा. दूसरी बात है कि 5वीं क्लास तक हम जो है अपनी मादरी ज़बान में, बच्चा का ड्रॉप आउट इसलिए होता है कि स्कूल जाते हैं, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, वो कुछ अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं, दूसरी ज़बान बोलने वाले होते हैं, तो उसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाता है. स्कूल छोड़ के वो ड्रॉप आउट रेशियो जो बहुत बढ़ जाता है. तो इसके लिए 5वीं क्लास तक मादरी ज़बान में वो क्लासेस रखी हुई तालीम का इंतज़ाम किया जाएगा. और एक तरह से कौमी तालीमी पॉलिसी का आगाज़ किया गया. इसमें जो आपस में जो मौज़ूआत हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो डिफरेंसेस हैं उसको ख़त्म किया. जैसे आर्ट्स है, साइंस है और कॉमर्स की जो इम्तियाजी तकसीम है उसको ख़त्म किया गया है, और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तवज्जो दिया गया है. इसी तरह से कल भी बात हो रही कि इसमें जो है तहकीक और रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर फोकस दिया गया है. और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ हायर लेवल पे जैसे कि कल भी बात हो रही थी, क्या है ये, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे एक
अगर पहले था 3 years BA, अब ये 4 years प्लस 1 year MA या 3 years BA 2 years MA। तो ये है कि 1 साल मुकम्मल होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट में 2 तरह की बातें हैं जो 1 साल में, एक अपने गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट के लिए किया है और एक स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए भी किया है। स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए ये क्या है कि 1 साल पढ़ा और उसके बाद किसी मजबूरी की वजह से वो छोड़ के यहां से चले गए, लेकिन वो 1 साल उसका बेकार नहीं गया। वो 1 साल के मुकाबले में उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगी, उस सर्टिफिकेट के जरिए से कहीं उनको जॉब मिल सकता है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट एक जो डिमेरिट मानी जाती है, 2 मिनट, गवर्नमेंट के लिए एक डिमेरिट मानी जाती है कि भी किसी भी इंस्टीट्यूशन इदारे के लिए एक डिमेरिट माना जाता है कि किसी भी इदारे से छोड़ के चले जाना, उसको हम ड्रॉप आउट कहते हैं। एडमिशन ना लेना एक ऐब की बात है, एडमिशन लेके किसी भी डिपार्टमेंट से अगर छोड़ के चला जाता है वो बहुत बड़ा डिमेरिट है, ठीक है। तो ये जो 1 साल के बाद एक सर्टिफिकेट मिल गई, यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट सतह पर वो जो ड्रॉप आउट का जो एक टैग लगना था वो नहीं लगेगा। दूसरी बात ये है कि इसमें तीसरे में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी, चौथे में एक सर्टिफिकेट मिलेगी, ठीक है, 5वें में अलग मिलेगी। इसमें जो है, अब ये एक सवाल पैदा, सर भी बता रहे थे अभी टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से, इतना आसान भी नहीं है इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, इतना आसान भी नहीं है, इसलिए कि ये इसमें प्रोविजन रखा गया है, जैसे कि आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, इन सब चीजों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब ये है कि एक बच्चा जो है यहाँ पे एडमिशन लिया, कुछ कोर्स यहाँ से किया, कुछ LU से किया, कुछ मानू से किया, कुछ और दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है, ये प्रोविजन इसमें रखा गया है। इन सब चीजों को एक्यूमुलेट कैसे करेंगे? एक इस प्रोविजन में रखा गया है कि ABC बनाया जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। आपने जहां से भी वो किया है उसके सबसे पहले तो इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के लिए आपको सिस्टम में पूरे यूनिफॉर्म तौर पर पूरे हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटी है उसको रजिस्टर करा। ये आसान है आजकल के दिन, जैसे कि आप NTA के जरिए से आजकल सारे जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं, 1986 वाली जो पॉलिसी थी उसमें जो है टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कॉमन इंट्रेंस टेस्ट रखा गया था। आजकल सारे कोर्सेज के लिए BA UG PG प्रोग्राम में जो है वो इंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। तो इन चीजों का माफी, 2 बातें और करूंगा बस 10। तो बहरहाल ये ABC के जरिए से आप इस कोर्सेज को, तमाम कोर्सेज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसका डाटा कर सकते हैं। और 2 साल 4 साल बच्चा छोड़ के चला गया घर, उसके बाद आके दोबारा ज्वाइन करना चाहता है, घर की मजबूरी खत्म हो गई, हालात बेहतर हो गए, तो वो अगर दोबारा उसी क्रेडिट के साथ, उसी स्कोर के साथ, उसी मार्किंग के साथ अपने आगे प्रोसीड कर सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। माजरत के साथ बहुत मैंने कोशिश की थी, मेहनत की थी, लेकिन एक वक्त के कॉन्स्टेंस को देखते हुए मैं इन्हीं बातों पे अपनी बात खत्म करता हूं। और मैं सब ऑर्गेनाइजिंग टीम को, यूनिवर्सिटी के सारे अफराद को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, जिम्मेदारान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपके पास वाकई में बहुत वैलिड पॉइंट्स थे, बट वी हैव ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। मैं बहुत जल्दी गुजारिश करूंगी लक्ष्मी नारायण यादव जी से, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एट। लक्ष्मी जी, अगर आप हैं हॉल में मौजूद तो? नहीं है। शौर्य, आप आना चाहेंगे प्रेजेंट के लिए? आप आ जाएं। Shaurya has been a guest faculty in our Department of Business Administration, and now he is a research scholar, and I request him to please come. Please keep your presentations very short, in 2 to 3 minutes. Please try and wind up. Thank you. First of all, good morning to all respected professors, and thank you so much for providing me this opportunity. And it is very first paper I'm going to present, so I need blessings from all the respected professors for this. The title of paper is The Academic Bank of Credit in India, a Flexible and Personalized Approach of Education. The Indian government has recently introduced the Academic Bank of Credit as part of NEP-2020. The ABC system is a credit-based system that allows students to earn credits for each course they take during their academic career.
The Indian education system has been undergoing several reforms in recent years, with the NEP 2020 being the latest initiative. One of key component is ABC, which is Academic Bank of Credits. For this study, I have reviewed already done researches for which I have done literature review. And there I find that what are the main challenges for NEP and ABC. So first the challenge is lack of awareness, and it is also finding of the survey I conducted that there is a lack of awareness about ABC and NEP in our students. And also the technological infrastructure and resistance to change. And the potential of ABC are increased student mobility, reduced dropout rates, enhanced employability, and improved quality of education. The survey which I conducted, the response based on the survey responses, it seems that there is generally low awareness of ABC system among students in state universities of Uttar Pradesh. The Academic Bank of Credit system in India has the potential to promote flexibility, mobility, credit transfer, and lifelong learning. The system can help in reducing the skill gaps, promoting innovation and entrepreneurship, enhancing the employability of learners, and improving the quality of education. This was the conclusion for the study, that further research is needed to explore the potential of ABC, and also efforts are needed to increase the level of awareness among students, because students are the significant stakeholders in education system. And this was all from my side. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Shaurya. Now I call upon Mr. Ankit Maurya, Research Scholar, Center for Rural Communication and Development. Ankit, please quickly come up. His topic is Unlocking the Potential of Learners, the Importance of Supportive Learning Environment. Thank you, ma'am. Very good afternoon to one and all present here. See, I will just keep it short. Last year, the Ministry of Health and Family Welfare launched the Telemanas. Telemanas is that talks about the mental health. So, NEP that includes about the equity and inclusion, that says about multilingualisms and many other aspects. This also includes about the supportive learning environment. For example, this university also has its career and counseling cell. The Maharashtra State Board has launched its Maharashtra Career Mitra, or the Maha Career Mitra, which we can say. So these are the very examples of supportive learning environment. Now, what is a supportive learning environment? It is basically where students feel comfortable and are willing to take risks and are encouraged to ask questions and share their ideas. This is the definition given by Dr. K. Kasturirangan, who is the former chairman of ISRO and the head of the committee who drafted the National Education Policy. What are the key elements that the supportive learning environment includes? Equity and inclusivity, flexibility and choice, collaborative learning, integration of technology, health and safety, supportive relationships. Now, what does these affects, or what does this leads to supportive learning environment? This leads to the enhancement or the advancement in the student academic profile, career guidance and counseling, mental health and well-being,
financial aid and assistance, services for students with disabilities also. What are the teaching innovatives? Likewise, when we see or when we talk about NSS, NCC, NYKS, or like related activities which are currently going or held being by the Ministry of Education in the higher education. Project-based learning is also an example. If we talk about the role of technologies, resources, then there is Nishtha and the Pandit Madan Mohan Malviya teaching regulations that is brought up by the Ministry of Higher Education. Oh, okay. On a concluding note, what I can say that to unlock the potential of learning or the learners, a supportive learning environment is quite important. That leads to the students' advancement in intellect, social and emotional path. There are also futuristic approach that could be a talk of research, likewise the best ways to use of technology or experiential learning in classrooms, collaborations among educators, students and other stakeholders, and lastly, determining the value of relationships between the teachers and students. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Ankit. I now call upon Abhilash Trivedi, another research scholar from the Department of Business Administration. For his presentation, his topic is a critical review on impact of NEP upon higher education. Please quickly come up. This is the last paper presentation for the session. Good morning, all the dignitaries and students and my fellow research scholars. I am Abhilash Trivedi, doing PhD in Business Administration. My topic, a critical review on impact of new education policy upon higher education. So, the basic objective of my research is main focus of this research is to examine the effects of the new educational policy 2020 on higher education. In addition, the study is aimed to highlight the key features of NEP and analyze the impact of current educational system on through NEP. My research methodology is a descriptive research. Mostly the data is collected from the secondary data. The data are collected from the Government of India's websites, magazines, journals, and other publications. So, first of all, there are few basic features, that essential features of this NEP 2020. First feature is that it is multidisciplinary system, allows students to choose subject from various streams such as science, humanities, and commerce, which fosters innovation, creativity, and ingenuity. The policy focuses on development of skills, especially the vocational crafts and life skill trainings. The learning trajectory offers the flexibility of students to choose their preferred subject based on the aptitude and interest, with equal importance given to the subject from all streams. Inclusive and equitable educational system by 2030. Board exam to test core concepts and application of knowledge. Every child will come out of school, adapt at least one skill. It is the most important feature of this policy, that the child who comes out from the school level should adapt at least one skill. And common standard of learning in public and private schools. Some critical issues in implementing the NEP 2020 is the skill development, requirement of training teachers, change management, legal complexities, etc., digital connectivity. These are the. So,
what is the need of this NEP? The government proposes the changes to the old educational system to improve the quality of education, foster innovation and research, and ensure global access to the Indian educational system through the implementation of new education policy. Main purpose of my research that I have told, now after studying the NEP throughout different areas, the major suggestions that I want to give is, the suggestions and recommendations are: vocational training and entrepreneurship internship should be provided to the student in various areas of the country to increase the awareness of the different geographical environment, and the children between the ages of 8 to 11, that is the primary stage. In the primary stage, moral stories will be used to provide education. It will be better to use the moral stories, and bagless education will be imparted at that stage. In early childhood, there should be some the Anganwadi centers should be transformed into kid zones, as the children may receive the facility education with the sports. It is also suggested that to develop a strong and capable generation in children in the age they must receive skill training. In the secondary stage, there should be the children should be given some economic benefits, economic help to tackle the economic challenges faced, especially in the rural areas. And also, in the evaluation system, there should be a balance should be created between balance between the 50% of textbook knowledge and 50% of promoting the local arts, small-scale industries to improve, to promote the employment with the education. In the higher secondary stage, there should be provision for custom education for the students, but sexual education should be abstained from the presence of parent. So, thank you. Thank you, Abhilash. I now call upon Professor Tanveer Khadija, who is the coordinator of this particular session, to kindly deliver the official vote of thanks. Ma'am. Please give a huge round of applause, students. A very good afternoon to all of you. First of all, I would like to offer my thanks to the organizer of the event, that is Professor Syed Adar Ali and his entire organizing team for organizing a 2-day national seminar on such a relevant topic of NEP 2020. Then I would also like to thank our chief guest for the today's session, that is Professor Chopre. It has been a pleasure, sir, listening to you since yesterday. Also, we have been in your company, and we feel very honored that you shared your experiences with us. And the way he said yesterday that the soul of NEP 2020 is research and innovation, that has been proved in this 2-day seminar. We also had our guest speaker today, Professor Ashish Pandey, who talked about Indian knowledge system and how it is integrated into NEP 2020. Then in today's technical session, we also had inputs from Mr. Yogesh Pawar. Although I'm not very technical savvy, so I could not manage very well, but with help from Doa Naqvi and one of the research scholars, I think I was able to handle my
mobile app the way he had asked us to do. And I'm sure later on we are going to benefit with his inputs, whatever he had given it today. And COs and POs mapping with, we have been listening to these terms from Honorable Vice Chancellor, sir, that how important it is, because we see that this is an outcome-based policy. So COs and POs mapping is a very relevant issue. I would also like to bring this to your knowledge that this was basically a 2-day session. A very, you can say, extensive deliberations were there, and some of our research scholars also presented their papers. And we have noticed this, that since whatever introductory keynote speaker lecture was there from Professor Manoj Dikshit sir, that earlier the knowledge-based system was there. So we have seen the journey of Indian education system, right from the beginning when it was knowledge-based. Then post-independence, there was a shift when it became focused on professional development, and people were running for degrees of MBA, BTech and all that. Then now, with the new education policy, 2020, the focus has shifted to research and innovation, which is sure going to help us reach to a kind of economic stability among all the leading countries of the world. And on one hand, we are talking about research and innovation. On the other hand, as Neeraj sir had just quoted a couplet, that we have to be connected with the past as well to improve our present. And so, as Ashish sir pointed out, that we have to be rooted in our Indian knowledge system. So whatever progress we are making today under NEP 2020, it has to be rooted in the Indian knowledge system. Only then the progress will be possible. And I would also like to thank all my technical staff who has been really helping us out, all the guest faculty members, students, research scholars, all my senior professors, whoever have been there for their esteemed presence. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. I think with this we will close this particular session for the day. We now take a break for lunch, and after that we will be gathering for the valedictory session and the technical session combined, depending on the availability of our experts. So if our experts are available on time and have already joined us, then we will proceed with the valedictory session. Otherwise, we gather for a technical session. But anyhow, in any circumstance, we meet after a gap of an hour in this hall again. Thank you.